Right. So we will have a discussion today on a very, very special topic that is called as the pneumonia, right? So we will discuss different types of the pneumonia. We will also discuss the best, for example, the typical organisms which are involved in the causing pneumonia. Okay. So what is pneumonia? It is basically the bacterial, fungal, or viral infection of the parenchyma of the lung, right? Parenchyma are basically the functional cells of the lung, right? So what happens in the pneumonia? We will discuss about the history of physical examination and we will discuss why these findings we will see in the pneumonia, right? But before that, let me discuss with you guys about the pathophysiology of the pneumonia, which is very interesting, okay? When we discuss about the pathophysiology, you must remember one thing. First of all, we will discuss about the, for example, how actually the pneumonia occurs, okay? So, what we have normally, listen very carefully. Normally, we are having, for example, this is a person. These are the upper respiratory tract and lower respiratory tract, okay? And you can clearly see this is the bronchi and then bronchioles, and after bronchioles, we have the alveoli, okay? Right? So, first of all, we will understand how actually these organisms get into our alveoli, okay? Yeah, to in our bronchioles. There are many ways, okay, through which these organisms can enter into our lungs. The very first one that you have to see, okay, that is actually the aspiration. Okay, sometimes obviously what happens, you're eating something, okay, right? You're eating something and accidentally that food particle or whatever that is, okay, that comes into your lungs, okay, that comes to your, for example, upper respiratory tract and then lower respiratory tract, okay, and then this will come and this will deposit somewhere in your lower respiratory tract, okay. So what happens after obviously depositing there, it will cause inflammation there, because you know food particles always have microorganisms, okay. So those microorganisms can come here and they can cause different types of the infection here, okay. Now listen, this is the first one, okay, which is called as the aspiration. The second one is the inhalation, okay. Inhalation, for example, you are standing in front of a person, okay. Inhalation, आपको पता है ना वो जो एयर ड्रॉप्स होते हैं, एरोसोल्स, राइट? विद द हेल्प ऑफ द एरोसोल्स भी ये कभी कभी ट्रांसफर हो सकते हैं, अगर किसी के मुंह के अंदर जो है फॉर एग्जांपल बैक्टीरियाज होते हैं और वो आपके सामने बात कर रहा है, राइट? सो उसके थ्रू भी वो हमारे बॉडी के अंदर इंटर कर सकते हैं, इनहेलेशनल कहते हैं उसको, राइट? इनहेलेशनल रूट, फाइन. So the next one is actually the hematogenous route. Hematogenous route. Okay, so what happens in hematogenous route? For example, sometimes what happens, there might be some kind of bacteria in your blood vessels, and these bacteria somehow these will enter into our lung parenchyma and cause pneumonia there. So these are the mechanism. The very first one is the aspiration, the second is inhalation, third one is hematogenous. Right. So what we will discuss now, what happens, for example, why these organisms are not affecting the normal people, right? Because we are having mucociliary system. What is basically mucociliary system? Let me explain. अब नॉर्मली क्या होता है कि जो कोई भी बैक्टीरिया जब वो आपके बॉडी के अंदर एंटर करता है, राइट, सबसे पहले वो आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड देन दैट विल कम इनटू योर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सी, इन दी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. अब क्या है कि हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, बल्कि हमारे ओवरऑल जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, राइट, वहाँ पे क्या होता है, इस तरह से म्यूकस होता है, ओके. वी हैव म्यूकस. तो इस तरह से म्यूकस होता है. म्यूकस के साथ साथ यहाँ पे क्या होते हैं हमारे एपिथेलियल सेल्स. दीज आर द एपिथेलियल सेल्स. एपिथेलियल सेल्स के साथ अटैच होते हैं सीलिया. सीलिया के ऊपर क्या पड़ा होता है, म्यूकस. नाउ लिसन, जैसे ही बैक्टीरिया आता है बाहर से तो हमारे पास होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिस्टम, डिफेंस सिस्टम होता है. द वेरी फर्स्ट थिंग इज म्यूकस. ये बैक्टीरिया के म्यूकस के साथ क्या, म्यूकस के साथ अटैच होता है. अटैच होने के बाद हमारे पास यहाँ पे होते हैं सीलिया. सीलिया जो है एक झाड़ू मारते हैं इसको, राइट, झाड़ू की तरह काम करते हैं. दैट बेसिकली मीन्स कि ये सीलिया अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं. जो भी कोई भी बैक्टीरिया म्यूकस के अंदर स्टक होगा, राइट, वो उस बैक्टीरिया को यहाँ से बाहर निकाल देंगे. अंडरस्टूड? कैसे बाहर निकालेंगे, ये जो सीलिया है ये ऊपर वाले डायरेक्शन में हमेशा फ्लो करते हैं ये, ओके, मूवमेंट करते हैं. सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दीज बैक्टीरिया विल गो इनटू आवर एसोफेगस. फिर एसोफेगस से वो हमारे स्टमक के अंदर, स्टमक से फिर वो डाइजेस्ट होता है, या तो फिर समटाइम दीज बैक्टीरिया विल गो इनटू आवर throat, okay, and from throat we will cough and
with the help of the cough we will throw that bacteria out of our mouth. Simple. Okay, so this is our defense system. Now why, for example, in some people these defense system will become impaired? What is the reason behind? There are basically many reasons, but the very first reason that we will see, okay, that is actually the impaired immunity. The first reason, impaired immunity. Impaired immunity. So what happens in impaired immunity? Why it occurs? What is the reason behind? There are some people who are HIV positive. In HIV, you know, our immune system becomes very, very weak. Okay, some people, they are, for example, in the immunosuppressive drugs, immunosuppressant drugs, for example, corticosteroids. Okay, including that, sometimes, as I discussed with you, this is our mucociliary system. Okay, these becomes disrupted smoking because of the smoking, or there can be some kind of the viral infection, h influenza, etc. So viral infection. Okay, and these can also occur due to the chronic obstructive pulmonary disease, which we discussed in very detail in the last lecture. What happens in the chronic obstructive pulmonary disease, especially the chronic bronchitis which occurs due to smoking, ये जो हमारे cilia है ये destroy होता है, and there will be excessive mucus production, जिसकी वजह से वो mucus क्या करता था, इस बैक्टीरिया को एक फेवरेबल, एक बहुत ही ज़बरदस्त environment provide करता था for growth. अच्छा, उसके अलावा है impaired cough. Sometimes कुछ लोगों में वो कफ नहीं कर सकते. The second one is impaired cough. Impaired cough. So do you know, ये जो कफ है आपका, this is a very, this is actually your defense system. कफ जब आप करते हो, that basically means आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जब कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस जाता है, तो आप क्या करते हो, कफ करते हो. कफ के ज़रिए आप उस ऑर्गेनिज्म को, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उस फॉरेन पार्टिकल को आप बाहर निकालते हो अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, राइट. लेकिन जब आपका कफ एम्पेयर होता है, उसके बाद यहाँ पे जो भी पार्टिकल आता है, जो भी एंटीजन आता है, जो भी पैथोजन आता है, उसको आप बाहर नहीं निकाल पाते, और ये यहाँ पे आके क्या कॉज करेगा, निमोनिया, राइट. ओके. किस वजह से होता है ये? This can occur due to, for example, stroke, or sometimes due to some tablets which will cause sedation. Okay. And next is the alcohol. सो दीज आर द कॉजेज ऑफ द इम्पेयर्ड कफ. अब ये जितने भी कॉजेज हैं हमारे पास, इनकी वजह से क्या होता है, ये जो म्यूकोसिलरी सिस्टम है ये हमारा वीक होता है, राइट. एंड ड्यू टू दैट ये जो हमारा डिफेंस सिस्टम है वो ओवरऑल हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वो डिफेंस सिस्टम वीक होता है, कफ नहीं करते, म्यूकोसिलरी सिस्टम वीक होता है. तो ये जो बैक्टीरिया है ये यहाँ पे आके स्टे करता है और यहाँ पे आके इन्फेक्शन कॉज करता है, एंड दैट विल लीड टू निमोनिया. अंडरस्टूड. ओके, सो दिस इज द transmission actually, okay, how it is transmitted into our body. And in the next session now we will discuss, give for example, once it gets into our lungs, once it gets into our alveoli, what happens after that. So first of all, let me oh, I forgot to draw the epithelial cells here, I'm really sorry. These are the epithelial cells. Okay, right. So I will not draw all of them because these will take time, so we don't have time, so we will draw only few of the epithelial cells and their cilia. Okay, epithelial cells and their cilia. Now listen very carefully. Normally you're having very, very big macrophages here. Okay, very aggressive macrophages here. So what basically macrophages will do, these are the MF. MF basically means macrophages. कुछ और नहीं सोचना आपने. Okay, MF means macrophages, right? Okay, so what happens, for example, जो organisms, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज द बैक्टीरिया. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बैक्टीरिया? मोस्ट कॉमनली, ओके, दिस इज कॉल्ड इज द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, राइट, व्हिच विल कॉज निमोनिया. सो ये ऑर्गेनिज्म आपने हमेशा याद रखना है. और ये मोस्टली कौन सा निमोनिया कॉज करता है? लोबार निमोनिया. आई विल डिस्कस, ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर all the types of the pneumonia. Okay, I have a lot of phlegm. I have a lot of mucus in my throat. I don't know why. Okay, so what happens? This is actually the streptococcus pneumonia, right? What happens? These streptococcus pneumonia, somehow it will get into our respiratory tract, and from respiratory tract it will travel down and it will reach our एल्वियोलाई. ओके, अब एल्वियोलाई में क्या करता है, ये जैसे ही बैक्टीरिया यहाँ पे आता है एल्वियोलाई के अंदर, ये बैक्टीरिया यहाँ पे आके इसके पास इस तरह से कुछ रिसेप्टर्स होते हैं. इन रिसेप्टर्स के थ्रू ये अटैच होता है हमारे
यहाँ पे किस चीज़ के साथ, एपिथेलियल सेल्स के साथ, राइट। और एपिथेलियल सेल्स को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, राइट। एट दैट वेरी मोमेंट ये जो मैक्रोफेजेस है, मैक्रोफेजेस को पता चल जाता है। मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, मैक्रोफेजेस आके इनको इनगल्फ करते हैं, ओके। ये है मैक्रोफेज, मैक्रोफेज ने क्या किया, ये है मैक्रोफेज का मुंह, और इसने क्या किया, इसको इनगल्फ किया, अंडरस्टूड। जैसे ये इनगल्फ करता है, ये मैक्रोफेज एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट होने के बाद ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर कुछ साइटोकाइंस रिलीज करता है। दिस इज एक्चुअली योर सर्कुलेशन। आपको पता तो है ना, हमारे लंग्स के अंदर, हमारे एल्वियोलाई के साथ साथ ब्लड वेसल्स भी होते हैं। तो ये क्या करता है, दिस विल रिलीज अ लॉट ऑफ द साइटोकाइंस, ओके। दो साइटोकाइंस आर एक्चुअली ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, including that interleukin 1, okay. The next is the interleukin 6, interleukin 6, and the next is interleukin 8, okay. Now what happens, these interleukins, especially tumor necrotic factor alpha, interleukin 1, interleukin 6, they will cause and they will stimulate the inflammation. कैसे करते हैं inflammation, listen very carefully, इसमें से कुछ साइटोकाइंस जाते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, राइट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको पता है यहाँ पे एक एरिया होता है विच इज कॉल्ड द हाइपोथैलेमस, ओके। सो दिस विल गो इनटू द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में जाके ये टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, एंड दैट विल लीड टू द फीवर, ओके। दिस इज द फर्स्ट मैकेनिज्म। उसके बाद सेकेंड मैकेनिज्म क्या है, सेकेंड मैकेनिज्म ये है कि ये हमारे ब्लड वेसल्स के ऊपर एक्ट करते हैं, राइट। ब्लड वेसल्स के ऊपर एक्ट करके ब्लड वास्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। सिर्फ यही नहीं होता है, हिस्टामिन भी होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन, बाकी भी कुछ होते हैं, राइट। लेकिन वी विल डिस्कस मोस्ट स्पेसिफिकली दीज वन, ओके। अच्छा, तो ये जाके हमारे ब्लड वेसल्स के ऊपर एक्ट करते हैं, ब्लड वेसल्स में क्या करते हैं, इंक्रीज वास्कुलर परमेबिलिटी, इंक्रीज वास्कुलर परमिएबिलिटी, ओके। वास्कुलर परमिएबिलिटी को ये इंक्रीज करेंगे। वास्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब ये कि ये जो एंडोथेलियल सेल्स है ये एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, ओके। एंडोथेलियल सेल्स एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। अब अगर एंडोथेलियल सेल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे तो क्या होगा, दिस इज समथिंग वेरी ऑब्वियस, कि यहाँ पे हमारे ब्लड के अंदर, राइट, हमारे ब्लड के अंदर जो कंटेंट होते हैं, जैसे कि यू कैन से प्लाज्मा प्रोटीन्स, वो प्लाज्मा प्रोटीन्स हमारे ब्लड के अंदर से लीक होकर हमारे एल्वियोलाई के अंदर एंटर होते हैं, ओके। यहाँ पे डायग्राम छोटा इसलिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, स्पेशली यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, प्लाज्मा प्रोटीन्स, दे विल लीक हियर इनटू द एल्वियोलाई, इंक्लूडिंग दैट प्लाज्मा प्रोटीन्स लीक होते हैं, इसके साथ कुछ फ्लूइड होता है वो भी लीक होता है, ओके। प्लाज्मा प्रोटीन, फ्लूइड, एटसेट्रा, ऑल ऑफ देम, इंक्लूडिंग दैट ये जो इंटरल्यूकिन 8 है, इंटरल्यूकिन 8 क्या करता है, लेट मी टेल यू। इंटरल्यूकिन 8, you have a lot of neutrophils in your blood, right? So what happens, what does the interleukin 8 do, these will go and these will stimulate our neutrophils, these will actually call our neutrophils, okay. So after that what happens is there is increased vascular permeability, so these neutrophils will also go into our alveoli, see, these are the neutrophils, okay. The next thing which you will see, that is actually the red blood cells, okay. Red blood cells, listen, in your blood you are having a lot of red blood cells. Now what happens when the vascular permeability increases, these red blood cells will also leak because there will be micro trauma to these capillaries. So these red blood cells will also leak sometimes, okay, in your uh, alveoli, fine. So what you have now, you have plasma proteins, you have a lot of fluid here, and you have neutrophils, and you have red blood cells, including that here was our macrophage and bacteria, okay. Here is our macrophage, inside the macrophage there is bacteria, this is the bacteria, not only one bacteria, there are actually a lot of bacteria, okay, and a lot of plasma protein, a lot of neutrophils, a lot of red blood cells, right. So what happens at the end, because of the fluid accumulation here, because of the dead cells, dead neutrophils, okay, what happens, from outside the oxygen cannot come into our lungs, so there will be deficiency of the oxygen in our lung. Why? Because obviously, first of all, it was an empty space, through that empty space the gaseous exchange occurred, but now these empty space has converted into the फ्लूइड फिल्ड कैविटी, राइट। अब यहाँ से जाहिर सी बात, अगर यहाँ पे इतना सारा फ्लूइड होगा तो ये ऑक्सीजन क्या बाहर से अंदर आएगा, नहीं आएगा, राइट। सो दैट इज वाई देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ द ऑक्सीजन, राइट। और इंक्लूडिंग दैट कार्बन डाइऑक्साइड भी जब यहाँ से बाहर नहीं जा पाता तो हमारे बॉडी के अंदर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, ओके। सो we will discuss that, but for now you just have to understand these pathophysiology, okay.
किसमें होता क्या है। अच्छा, सो एज वी डिस्कस्ड कि इसके अंदर ये सारा फॉर एग्जांपल प्लाज्मा प्रोटीन, न्यूट्रोफिल्स, रेड ब्लड सेल्स एक्यूमुलेट होते हैं। सो at the end they will form a picture. That picture is actually called as the exudate. Okay, they will form exudate. What is exudate? When these uh, components of the blood, okay, especially neutrophils, red blood cells, plasma proteins, fluid, when they will leak here into our alveoli, okay, that process is called as the exudate. Exudate. Okay, so exudate basically means what? Air filled alveoli are converted into the inflammatory fluid and cells, right? We had air filled alveoli first of all, right? But now these air filled alveoli, okay, this is converted into the inflammatory fluid, inflammatory fluid and cells, okay, right? Inflammatory fluid and cells. And what do we call these? Actually we call this consolidation, okay? ओवरऑल यहाँ पे जो फॉर एग्जांपल एक इमेज बनता है एक्सोडेट की वजह से, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज द कंसोलिडेशन, consolidation, right? So this is actually called as the consolidation. This is very very important term, okay, trust me. अच्छा, उसके बाद कंसोलिडेशन आप किस में देखते हो? स्पेशली चेस्ट एक्सरे जब करते हो ना, चेस्ट एक्सरे में आपको कंसोलिडेशन नजर आता है, ओके? Especially you will see this on the chest x-ray, okay? So chest x-ray is done and we saw consolidation in these patients. Now we will discuss further उसके अलावा इन पेशेंट्स के अंदर क्या होता है ड्यू टू कंसोलिडेशन। यहाँ पे जब कंसोलिडेशन होता है, ड्यू टू कंसोलिडेशन वी विल सी ventilation perfusion mismatch, we will see, okay, VQ mismatch. It is also called as the VQ mismatch. इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं होता यहाँ पे, ओके? ऑक्सीजन एक्सचेंज इज impaired, right? So we have discussed all these conditions. Now yes, the next part, that is actually the cough, okay, fine. These patients will develop cough and that cough will be sputum like cough, okay? Matlab, let me explain. The next part will be cough, okay? Cough. What happens inside the cough actually? When they cough, these patients, okay, the very first thing that you saw, okay, here was a lot of fluid accumulated. अब ये जो पेशेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये कफ करते हैं ताकि इस फ्लूइड को अपने लंग्स से बाहर निकाल सके, फाइन। तो इसीलिए ये क्या करते हैं? कफ करते हैं। अब कफ के अंदर क्या होता है? कफ के अंदर इनका जो कफ होता है दैट इज एक्चुअली द प्रोडक्टिव कफ, ओके? That cough is not only cough, that is cough is not dry cough, that cough is actually productive cough, right? मतलब बलहम वाला कफ होता है इनका, जो उसके अंदर म्यूकस फ्लैजम वगैरह होता है, ओके? अच्छा, yes, including that let me tell you one more thing, okay? I will actually discuss these in the types of the pneumonia, but here also I will tell you इनका जो कफ होता है मोस्टली इनका जो होता है that is actually rusty sputum, okay? इनका जो कफ होता है दैट इज द रस्टी स्पूटम। वाई रस्टी स्पूटम क्यों होता है? क्योंकि ये जो रेड ब्लड सेल है ये बाद में ये रेड ब्लड सेल्स की डेथ होती है, ये मर जाते हैं। जब ये रेड ब्लड सेल्स मर जाते हैं तो इनके अंदर से होता है आयरन रिलीज, ओके? और ये आयरन फिर क्या है बाद में इस म्यूकस के अंदर या इस फ्लूइड के अंदर एक्यूमुलेट होता है, और यही फ्लूइड जब कफ के थ्रू बाहर निकलता है तो दैट विल गिव रस्टी कलर टू आवर स्पूटम, ओके, राइट? अच्छा, तो ये होता है कफ। अच्छा, अब क्या है कि कुछ दिन बाद होता है रेजोल्यूशन फेज, ओके? रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन में क्या होता है? रेजोल्यूशन में जो फॉर एग्जांपल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना यहाँ पे इस एरिया में, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सबसे पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दे विल बी किल्ड। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स killed, the very first thing. The second thing that you see that is the macrophages. Macrophages will clear the debris, clear debris. Debris का मतलब ये है कि यहाँ पे जो डेड न्यूट्रोफिल्स है, डेड बैक्टीरियाज है, यहाँ पे जो जितना भी फाइब्रिन बना हुआ है, राइट, उसकी ब्रेक डाउन करता है, तो सब कुछ ये जो मैक्रोफेज है उसकी सफाई करता है, राइट? दिस इज द जॉब ऑफ द मैक्रोफेज। उसके बाद क्या है? जो लंग आर्किटेक्चर है, स्पेशली लंग आर्किटेक्चर, लंग आर्किटेक्चर जो है वो रिस्टोर होता है, ओके? मतलब जैसा था लंग वैसे ही वापस वो रिस्टोर होता है, अपने पुराने फेज में चला जाता है, राइट? बट कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि फॉर एग्जांपल
कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जिनके अंदर क्या होता है कि ये जो लंग आर्किटेक्चर ये कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय होता है, और यहाँ पे जो है फाइब्रोसिस या स्कार फॉर्मेशन होता है. वी विल डिस्कस दैट, डोंट वरी. ओके, सो फॉर नाउ just trust me कि we have discussed for 20 minutes the pathophysiology of the pneumonia, which is very very important. If you understand the pathophysiology, you will understand the pneumonia, you will understand the treatment. आपके लिए treatment diagnose करना बहुत बहुत easy होगा, right? In the next lecture I will tell you about the कि how actually congestion occurs, how red hepatization, gray hepatization and resolution occurs, right? Because ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ ना, these are the most important things according to your exam. Trust me, these questions will definitely come in your exams. I am 100% sure.